India-Russia defense engagements progressed in an unprecedented manner in recent times. I have had the honor of visiting Moscow twice and Dushanbe once to participate in the celebrations for victory in the Great Patriotic War and in 2 rounds of SCO defense ministers meeting. We hope that Russia will remain a major partner for India in these challenging circumstances. इस वक्त जो है भारत रूस सहयोग सैन्य और जो सैन्य तकनीकी क्षेत्रों में ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है हमारे देशों के संबंधों के लिए। इस विकसित हो रही दुनिया में आज जो अंतर सरकारी आयोग की बैठक हुई मेरे समकक्ष और मैं हमने हमारे बीच विस्तृत चर्चा हुई हमारे सहयोग के बारे में रक्षा के क्षेत्र में और हम आगे के लिए योजनाएं हमने बनाए। मुझे विश्वास है कि जो दोनों देश के जो एजेंसियां हैं वे योगदान करेंगे ताकि हम क्षेत्रीय विश्वास को बढ़ा सकें और वैश्विक स्तर पर सुरक्षा को बढ़ा सकें। Our discussions today will address the emergence of multipolarity and rebalancing. We look too at the consequences of over-centralized globalization. The COVID-19 pandemic has raised questions about the current model of global affairs, but the long-standing challenges remain even as new ones emerge. Prominent among them are terrorism, violent extremism, and radicalization. The situation in Afghanistan has wider repercussions, including for Central Asia. West Asia or the Middle East continues to present hotspots. Maritime security and safety is another domain of shared concern. We both have a common interest in ASEAN centrality and ASEAN-driven platforms.